My dear brothers and sisters, welcome to Sur Sangam Reflection from Jaipur. We are completing the liturgical year with that great feast which we celebrate every year, namely Christ the King, Christ Raja Ka Tyohar. It was established in 1925 by Pope Pius IX. Why did he do this? Because there were many reasons. After the First World War, the world had changed and a secular world had come in. Religion was actually discarded, and therefore there was a Bolshevik revolution in Russia, and the kingdom of Russia had changed totally. There also we had fascism that was coming up in Italy. We also had the movement of Hitler, who was trying to conquer the whole world. Besides that, we also had a movement in Mexico. And what was that? That clericalism was totally rejected. In other words, religion was rejected by that king. And such a thing happened, the ruler was against anyone who is actually giving chance to religion to flourish. And there happened something extraordinary. One of the priests, a Jesuit priest called Michael Pro, he is actually caught, and without any reason he is martyred. He is executed by a firing squad. And this particular priest actually refuses to do any mask on his head when he is being murdered. He opens his hands and says, Viva la Christa. In other words, the King of the world, Jesus Christ, be praised. Dear friends, all this shows that why are we celebrating the feast of Christ the King? That also at the last feast of the whole liturgical year. Because we believe that the rule of Jesus Christ is ultimate. Because He is the one, the Son of God, who has come to give us the ruling of God Himself. And what is that ruling? It is not that ruling which we think which any other king had. In other words, if you look at a place in the geography, that we will see the kingdom of, say, the kingdom of England, the kingdom of America, or any other kingdom for that matter. It is not that. The rule of God is not a place, it is not an army, it is not coercion, it is not actually in which you dominate people. No, it is not that. It is love alone, love and service. That is exactly the last words that Jesus had spoken. That I love you and you love one another as I have loved you. I, your Guru, I, your Master, I am ready to wash the feet of one another, and that is exactly what you must do. This is how Jesus established the kingdom of God on this earth. And today, therefore, what we are talking is, Thy kingdom come. That kingdom of God must once again come here on this earth. Not merely because we have ceased to rule, but because we rule by heart. Jesus has come to dwell in our heart. That is why Jesus says, this kingdom is in your heart. Remember the old words when the prophet had said that I will remove the heart of stone and give you the heart of flesh that can love and serve and forgive and understand. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम क्रिस्त राजा का त्योहार मना रहे हैं। क्रिस्त राजा का त्योहार का मतलब क्या है? आज के सुसमाचार में हम देख रहे हैं क्रिस्त राजा वहां है जो क्रूसित प्रभु है। और वहां पर क्या हो जाता है कि प्रभु वहां पर क्रूस पर टंगा हुआ और लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं अगर आप राजा हो तो नीचे आ जाओ और अपने आप को बचा लो और हमें भी बचा लो। और कोई ऊपर थूकता है, कहता है कि तू असमर्थ है सब करना। और ये ऐसी परिस्थिति वहां पर उत्पन्न होती है जो हमें लगती है कि एक राजा के लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि राजा क्या करता है? राजा दूसरों के ऊपर अपना अधिकार जताता है। राजा के पास बहुत बड़ी आर्मी है, वो दूसरों को नष्ट करता है। राजा वह है जो अपना चलाता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। राजा एक महल में रहता है और ऐसा नहीं है कि वह गरीबों के पास रहता है। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है, वो राजाओं का राजा है क्योंकि वह दिल का राजा है। जैसे एक माँ कहती है ये मेरा राजा है, मेरा बेटा है, उसी प्रकार वो हमारे दिल में बस जाता है।
और इसीलिए उसका राज्य क्या है? उसका राज्य वहां है, हर घर में जहां पर प्रेम है वहां पर उसका राज्य है। हर समाज में जहां एकता है वहां पर उसका राज्य है। और जहां पर ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, और इसीलिए वे स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थी हैं, वही उनका राज्य है। और यह कहां पर है? ना केवल एक कलीसिया में जो जिसके बारे में हम कह रहे हैं, बल्कि हर जगह पर है। किसी भी मजहब में क्यों ना हो, वहां पर जिसको चाहे हम राम राज्य करें या प्रभु का राज्य कहें, वो सभी एक प्रेम का राज्य है। उसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, बसाने के लिए, हमारा दिल में दोबारा रखने के लिए प्रभु आए हैं, और इसीलिए आज का दिन हम मना रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कहते हैं प्रभु हमारा राजा है, तो हम उसकी प्रजा है। यथा राजा वथा प्रजा। इसका मतलब क्या है? हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना होगा, न केवल आज एक जुलूस बनाकर या हम आराधना करके। इससे भी बढ़कर हम अपने दैनिक जीवन में कैसे जीते हैं, इस पर निर्भर है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस. That is why we hail him as the king of our heart. He is the king of the whole world, the beginning and end, the alpha and the omega. That means not merely that we are going to worship him and we actually hail him, but actually we live accordingly. Once we are able to do that, we can truly celebrate this day, the feast of Christ the King of our heart, King of the whole world, who comes to give us a new way of living, and that way is the human way of living, where we give credence to humanity and not to inhuman way of living, not only conquering others but conquering with love. Thank you and God bless you.